Hello students. Standard 10, subject Social Science, chapter number 13, Manufacturing Industries, session 2. Students, in the previous session we discussed about introduction of chapter Importance of Manufacturing Industry in Economy to achieve faster economic development, to solve the problem of unemployment. At the same time, we also discussed about different classification of industries on the basis of criteria like labor, raw material used, on the basis of ownership, etc. And in that, we discussed about few industries which comes into the category of agro-based industry. Today, we will continue our session with the same title. So, another agro-based industry which is prevailing in Indian economy is woolen textile industry. As a cottage industry, the history of woolen textile industry is very old because since the ancient time, humans are rearing the animals like a goat, sheep, cow, buffalo, etc. And from the fur or a hair which grows over the body of sheep, the humans develop the talent to woven the woolen textile. Maximum woolen textile mills are there in Punjab. Next comes the Maharashtra. There are woolen textile mills in Uttar Pradesh also. Ahmedabad and Jamnagar in Gujarat are also the center of woolen clothes. Other major centers are Bikaner, Jaipur in Rajasthan, Srinagar in Jammu Kashmir, and Bangalore in Karnataka. India also produces varieties of woolen carpets. Now, synthetic textile industry. As at the time of discussing the cotton textile industry, we saw that today cotton textile industry is facing a tough competition from the synthetic fiber, and that comes from the category of synthetic textile industry. Nowadays, with the use of technology, the humans have developed the fibers which are made of different chemical solutions, and the clothes which are made from such kind of synthetic fibers are considered as a synthetic textile. So, the clothes made from the synthetic fiber made by man is very strong, it is durable and does not retain wrinkles. Hence, this industry has developed very much. कि सिंथेटिक फाइबर में से जो फैब्रिक बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग होता है, डज नॉट रिटेन रिंकल्स, मीन्स जब उसको आप पूरा मसल दो तो उसमें रिंकल्स नहीं आते यानी झारियाँ नहीं पड़ती, इस वजह से वो फैब्रिक स्ट्रेट एंड क्लीन रहता है. सेकेंड थिंग, मोस्ट ऑफ द कलर ऑफ द सिंथेटिक फाइबर डज नॉट गेट फेडेड ईजिली. ये जो कपड़े होते हैं इनका कलर आसानी से फीका नहीं पड़ जाता, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली such textile industry has developed very much.
The cotton fibers are mixed with the synthetic fiber to get the mixed variety of clothes. Many times it may happen that the synthetic fiber or the clothes made from pure synthetic fiber is harmful for the skin, क्योंकि ये एक तरह से केमिकल में से बने हुए क्लोथ्स होते हैं, तो बहुत से लोगों को उससे रिलेटेड स्किन इश्यू हो सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू गिव better satisfaction to consumer, cotton is mixed with the synthetic fiber in the textile, so the clothes can be having a both the property of few properties of cotton fabric or thoda property of synthetic fiber also. Main producer of these industry are Kerala, Gujarat, Uttar Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, etc. There are other centers also of synthetic textile industry in India, and that includes Surat, Kanpur, Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, Chennai, and Modinagar, etc. Now, another most important agro-based industry of India is sugar industry. Making jaggery from sugarcane juice is very old industry in India. You can say that पुराने टाइम से ही हम शुगर कैन के जूस से जैगरी यानी गुड़ बनाने का नॉलेज डेवलप कर चुके थे. शुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकंड आफ्टर टेक्सटाइल इन अग्रेरियन इंडस्ट्रीज इन इंडिया. कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो रॉ मटेरियल मिलता हो उस पे चलने वाले इंडस्ट्रीज के लिस्ट में शुगर इंडस्ट्री टेक्सटाइल के बाद सेकंड नंबर पे है. एंड दैट मच वाइड नेटवर्क वी हैव of sugar industry in our India. After ripping the crop of sugarcane, it has been squeezed within 24 hours so that the amount of water is not reduced, otherwise its sugar content will decrease. जैसे ही शुगर कैन को फार्म से कट किया जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 आवर्स के पहले उसका जूस स्क्वीज कर लेना ज़रूरी है. वाई? कि जितना स्क्वीजिंग में डिले होगा उतना शुगर कैन कंटेंट में जो जूस अवेलेबल है या उसका जो स्वीटनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है. एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम शुगर इंडस्ट्री को ऐसे एरिया में ही डेवलप किया जाता है जहाँ पे नियर बाय एरिया से आसानी से शुगर कैन एज अ रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाता हो. And that's why the sugarcane factories are located near the sugarcane growing centers. In exam, students, you may get the question for 2 marks that why the sugar factories are located near the sugarcane growing center. So you have to write point number 3 as an answer. Sugar factories are located mostly in Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, and in our Gujarat also. This industry is developed in Gujarat at Bardoli, Gandevi, Surat, Navsari, Vyara, Bharuch, Kodinar, and Talala of Gir district. Now, another agro-based industry is one of the most important product which is required in a present time is the paper. So, paper industry. Paper is made out of soft wood like bamboo, grass, and molasses of some plants. Paper industries are operating mostly in Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Odisha, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Tamil Nadu, and Haryana states. Now we will move to the second category, that from the nature we are getting raw material from the agriculture sector also. At the same time, there are lots of minerals which are available from the beneath of the earth, and many industries developed themselves with the help of such raw material minerals
and those industries are considered as a mineral based industry. तो इंडिया में along with the agricultural industry और you can say agro based industry, हमारे पास बहुत बड़ा एक नेटवर्क है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का भी. So about that we will discuss now thereon. So those industries wherein minerals are used as a raw material are known as mineral based industry. कि जो भी इंडस्ट्री में मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता हो, such kind of industries are called mineral based industry. So students, in exam you may get the question for 1 mark that what is mineral based industry. So the given point will be your answer. Here in the map of India you can see the different mineral based industries operating in a different states of India. Industries such as iron and steel industry, aluminum industry, copper industry, chemical industries, fertilizer industries, cement industries, means of transportation making industries, and electrical goods making industry are included in the category of mineral based industry. So again students, in exam you may get the questions that which industries are included in the mineral based industry. Then you have to write these all name starting from iron and steel till electrical goods. Okay, so let's discuss few important industry under the title of mineral based industry. And the first one, the most important one, which is considered as a key industry for the economic development of any nation. अगर किसी भी कंट्री को फास्टर और क्विक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उनके वहाँ पर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जो होनी चाहिए उसमें से एक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. Iron and steel industry is the axis of modern industrial and economic development, as I told. है ना? If you want to achieve the quick and faster economic development, there must be a strong network of iron and steel industry in your economy. It is considered as the base industry or key industry. Machines and other constructions are produced from its production. Students, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना हो आज के टाइम में, देन डेफिनेटली आपको कुछ सॉर्ट्स ऑफ मशीनरीज रिक्वायर्ड है. लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में रॉ कॉटन में से सीड्स को सेपरेट करना, फिर उन कॉटन्स में से थ्रेड मेक बनाना, थ्रेड का वीविंग करना, देन उसका कटिंग वगैरह करना, स्टिचिंग्स वगैरह करना, ये सभी चीज़ों के लिए वैरायटी ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड है. तो वो सब मशीन्स कहाँ से अवेलेबल होते हैं? फ्रॉम द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियल सेक्टर. इवन एट द सेम टाइम आज के टाइम में अगर कोई मॉडर्न कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करना है तो कंस्ट्रक्शन वर्क में भी वैरायटी ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड होते हैं. सो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एनी स्मॉल पिन टू बिग जायंट प्लेन, you need different types of machines, and those machines are available only when there is a good establishment of iron and steel industry in country. This can also be considered as a key industry, as I told, है ना. The process of making iron is very old in India, and iron was imported from India to make swords in Damascus. कि इंडिया में जो फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन अवेलेबल था उसकी वजह से डेमास्कस में वॉर के लिए जो वैरायटी ऑफ स्वॉर्ड्स बनते थे उसके लिए आयरन इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था. सो द क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया टू प्रोड्यूस आयरन वॉज एस्टेब्लिश्ड एट पोर्टो नोवा इन तमिलनाडु. अगेन अ क्वेश्चन फॉर 1 mark ऑब्जेक्टिव. इट वॉज क्लोज्ड ड्यू टू सम रीजन्स. कि तमिलनाडु के पोर्टोनोवा सेंटर पर
इंडिया का फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था, बट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस इट वाज क्लोज डाउन. आफ्टरवर्ड a successful production of raw iron was started again at Kulti. And finally, in 1907, the factory established at a Jamshedpur, that is Tata Iron and Steel Corporation of India, which is named as TISCO in the present time. आज वो टिस्को के नाम से जाना जाता है. वो फैक्ट्री का एक लार्ज स्केल सेटअप स्टार्ट हुआ. Factories were established at Banpur in West Bengal and Bhadravati in Karnataka also. The iron and steel factories were also established in Bhilai, Rourkela and at Durgapur. Other large-scale factories were found at Bokaro, Vishakhapatnam and Salem. Iron ore, coal, limestone and manganese are used as raw material for producing iron and steel. कि जहाँ पे भी आयरन एंड स्टील मेकिंग का वर्क होता है वहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मिनरल्स का जो यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल, दे आर आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज. सो इन क्वेश्चन you may get a 1 mark title like which raw material are used for producing iron and steel. So the answer will be iron ore, coal, limestone and manganese. A mini steel plant has been found near the Hazira in our Gujarat also. The administration of all iron and steel factories except the Tata is handed over to the Steel Authority of India Limited, which is in short considered as a SAIL. कि जो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके अलावा के जितने भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया में है उनका सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अथॉरिटी सेल के द्वारा किया जाता है. इंडिया रैंक्स फिफ्थ. इंडिया रैंक्स फिफ्थ स्टूडेंट्स. द पोजीशन इज फिफ्थ पोजीशन इन द वर्ल्ड इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन. Now second, one of the important modern required mineral, that is aluminium. And we have good amount of networks of aluminium refining industries in our India. After iron and steel industry, aluminium refining is another important industry. This mineral is light in weight, strong, malleable, smooth conductor of electricity and rust proof. So these are the characteristics of aluminium. In exam students आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्यूमिनियम. सो यू हैव टू राइट द सेकंड पॉइंट. बॉक्साइट इज द एल्यूमिनियम ओर. कि एल्यूमिनियम जो हम यूज करते हैं वो जब नेचर से हमें अवेलेबल होता है तब वो जो रॉ फॉर्म में होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ बॉक्साइट. दैट यू ऑलरेडी लर्न इन योर साइंस सब्जेक्ट ऑल्सो. Other minerals are mixed with aluminium, which is useful in making car, railway, aeroplane and machines. कि normally aluminium एक लाइट वेट मटेरियल है बट उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर कर एल्यूमिनियम के साथ कुछ अदर मिनरल्स को मिक्स करके उसमें से वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टिबल शीट्स एंड मटेरियल्स बनाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल कार मेकिंग इंडस्ट्री, रेलवे, एरोप्लेन और वैरायटी ऑफ मशीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. About 40 to 50% of expenses is incurred in the electricity in mineral-based industry of aluminium. So this industry is founded where the hydroelectricity and the bauxite are available easily. इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कंजम्पशन होता है एल्यूमिनियम रिफाइनिंग में एंड दैट्स वाई जहाँ पे आसानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट्स हो ताकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर को कम से कम स्पेंड करना पड़े और इजीली रॉ मटेरियल बॉक्साइट अवेलेबल हो, वहाँ पे ही एल्यूमिनियम रिफाइन इंडस्ट्री को डेवलप किया गया है.
Factories producing aluminium are established in Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, and Tamil Nadu. Now, the third important mineral which the humans are using since the ancient time is the copper. So, copper refining industry. The uses of copper has increased due to its property such as easy and very good conductor of electricity, and it can be mixed with other minerals easily कि कॉपर आसानी से किसी भी मिनरल के साथ मिक्स्ड हो जाता है. सेकेंड, it is the most effective and a good conductor of electricity, and that's why day by day its uses are increasing. Copper is useful in electricity industry, in making of refrigerator, air conditioner, variety of automobiles, radiators and domestic utensils also. First copper refining units of India was founded by Indian Copper Corporation, that is ICC, at Ghatshila in Jharkhand. So this is the question for objective, that where the first copper refining industry or a unit was found. So it was at Ghatshila in Jharkhand. And what was the name of corporation? ICC, that is Indian Copper Corporation. In 1972, ICC was handed over to the Hindustan Copper Limited, that is HCL. Beside HCL today, the copper is produced by many private sector industries also. And yet the domestic production is not enough, so it has to be imported. कि आज इंडिया में जितना कॉपर का प्रोडक्शन होता है उसके कंपैरिजन में स्टूडेंट्स हमारे जितनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में जहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल डे बाय डे बढ़ रहा है, उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए गुड अमाउंट ऑफ रॉ कॉपर हम वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से भी इंपोर्ट करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सेशन 2 of chapter 13. I hope the explanation would be helpful to you. Keep on revising, keep on learning. Goodbye. Take care.